Energy. मतलब हो गया yeah circulatory system because we are meeting after I guess a very long time. Okay, so is the chapter done? कहाँ तक किया था? अगर आर्टरीज वेंट कर रहे हैं, हार्ट हुआ था, अगर हार्ट हुआ तो आर्टरीज वेंट पहला हो जाता है। तो मैं पढ़ाते हो ब्लड वेसल और हार्ट पे जाता है। ओके, ब्लड हो गया था, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन का डिफरेंशिएशन डायग्राम ड्रॉ करवाया था आर्टरीज वेन्स का। ओके, उसके बाद हार्ट कुछ स्टार्ट नहीं किया है। हाँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप I want you to close your textbooks. बोलो क्या हुआ? हाँ, तुम्हारा एग्जाम हो गया ना वैसे?
पेपर हमेशा अच्छा ही होता है, पेपर कहीं बुरा होता ही नहीं। 80 मार्क का था। ऐसा एक भी इसको 80 आउट ऑफ 80 मिल रहा है, तो क्या क्या चल रहा? 75 प्लस मिल रहा है, 75 प्लस। शक्ल दिखाई तुझे देख नहीं जाऊंगा। $75+ एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, तब बताना जरूर। सर लाके सर 75+ में, ओके, तब मैं मानूंगा मिला। क्या जहाँ तक मुझे पता रैंक तो देती है चुटके से फोटो को निकालना क्यों? नहीं मेरा because normally all the schools give papers to their should be done here, पर मैं previous question की papers because अगर पेपर घर पे नहीं जाएगा आपका स्पेशली 10th का, how would you come to know कि आपका मिस्टेक्स कहाँ हो रहा है? अरे इतना तुम्हारा मेमोरी अच्छा होता है तब भी देख के याद रखना, तो तुम्हें 80% में मतलब 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए था। हाँ ये बात भी सही है। Okay, we start with the next part, that is I said to close your textbooks. First part is basic, so I think everybody can understand and give the answers. Already आपने start किया था. Where is the position of the heart? It is present in the center of the thoracic cavity, on the apex tilted on the left side of your body. Thoracic cavity is what your heart is present. The size of the heart is one's own clenched fist. One's own. बाजू वाले का नहीं. So one's own clenched fist is the size of the heart. Then the weight of the heart is somewhere about 300 to 400 grams. That's the weight of the heart. The color of the heart is reddish brown. So it's a reddish brown color. And most important, it is well protected externally by a membrane known as pericardium. This pericardium, so in the next slide, you can see this is the position of the heart. Okay, it is just exactly present behind the sternum bone. यहाँ पे आपका breastbone, इसे अपन sternum bone कहते हैं. इसके पीछे the apex tilted towards the left side. Externally covered by a tough membrane known as pericardium. The membrane and the wall. In बीच में there is a space known as pericardial space. Within this pericardial space is present your pericardial fluid. So two questions which can be asked. What is the function of pericardium and what is the function of pericardial fluid? Madam, बाद में check कर लूँगा. Right or wrong here. Yeah, what is the function of pericardium? Protect the heart or protect from mechanical damage or mechanical damage, which could be properly given as it acts as a shock absorber. It protects the heart, acts as a shock absorber, and somewhat maintains the shape of the heart. So external part है, tough layer है, थोड़ा बहुत shape को maintain भी करता है. Then within it is a fluid which is known as pericardial fluid. Function of pericardial fluid: reduce friction, prevent friction. It acts as a lubricant.
और एक फंक्शन है। Then it is also acting as a shock absorber. So no doubt the pericardium is a shock absorber, but apart from that it also acts as a shock absorber and it acts most importantly as a lubricant. Okay, the heart is continuously beating. इसका एक ही function है pump करना. So imagine if my wrist is the heart, the outer part is pericardium and the heart is pumping. So if this pumping occurs and there is no space, there is no fluid, what would happen? Friction would have been created. Because of the friction, heat would have been evolved. Heat के वजह से the heart would have burned. दिल जले. Okay, heart burn out or dil jale, whatever you say it, but that would have been happening. So to avoid that, there is a fluid present that is known as pericardial fluid. Am I clear? Moving to the next part is, so this is what diagram looks like. Pericardial sac, इसके अंदर pericardial fluid is there. Now we have done the external part. External part में और एक चीज पढ़नी है हमें. The blood vessels present on the heart. लेक्चर के बीच में कैसे आएंगे? मैं लेक्चर छोड़ के आऊँ? वही बोल रहा था, इसके लिए बोल रहा हूँ। वेलकम आपका लेक्चर ना? So here the pericardial fluid is there. Now after that is very specifically the outer part. On the outer part are a lot of blood vessels sit, जो अपन बाद में पढ़ने वाले हैं. So we straight away move on to the inner structure of the heart. Choice is yours. You want to draw diagrams or not? छोटे-छोटे rough diagram draw कर रहा हूँ. अगर आपको लगता है draw करना है तो करो, नहीं तो just focus on to this part. Now heart, when I cut open the heart, how many chambers? 4. So we have 4 chambers. Which are the upper chambers? Which are the lower chambers? Upper are auricles. Lower are. What is the right side of the heart concerned with? What type of blood? Now my next question is, when there are 4 chambers in the heart, 2 auricles, 2 ventricles. Upper chamber are auricles, lower chamber are ventricles. How are these 4 chambers formed? Which? Now. Septum. Now. Inter. Auricular. The interauricular septum, interventricular septum. So we are saying interauricular, interventricular septum. Between the auricles and the ventricle, atrioventricular septum. सन इनके बीच में भले septum है, atrio, auriculo, ventricular septum. पर ये इतना well defined नहीं है because इनके बीच में there is always a walls. There are 2 walls. On the right side there is a tricuspid. On the left side there is a confusion हमेशा होता है right side और left side. Okay. मैथ्स में राइट को शायद शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हो, राइट एंगल ट्रायंगल या आरटी लिखते हैं अपन बहुत बार. याद रखना, आर फॉर राइट, टी फॉर ट्राइंगल. ये याद रहेगा तो हो गया, बिकॉज हमने फिर बाइकस्पिड कंफर्म हो जाता है. सो राइट साइड में ट्राइकस्पिड, सो लेफ्ट साइड में ये कब काम आएगा? लेफ्ट में लिखा है समझ में आता है, ये गलत रुकता है, ये भी गलत था. तो चलन, so tricuspid, bicuspid one. Now
Another important part over here is the auricles which are formed. They have a thin wall compared to ventricles. Ventricles have thick walls. Normally asked as walls के ऊपर give reason करके ही पूछेंगे. Why is the auricular wall thin compared to ventricles? एक मिनट पहला कंप्लीट करना क्वेश्चन. एक क्वेश्चन ये हो जनरल क्वेश्चन, walls of ventricles are thicker than auricles. दूसरा स्पेसिफिक क्वेश्चन, why is the right ventricle thicker than the auricles? Right ventricle is thicker than the auricles. तीसरा क्वेश्चन, why is the left ventricle thicker than either right ventricle or auricles? वो किस कॉम्बिनेशन में पूछेंगे I can't say, पर जो भी कॉम्बिनेशन में पूछना है आपको आंसर सभी का लिखना होगा, मतलब जिस जिसका पूछा गया है. तो पहला क्वेश्चन, why are the auricles thin walled and ventricles? Which is away from the heart, but the auricles also comes throughout the heart. So what? So the ventricle. So with the आंसर राइट है पर कीवर्ड्स मिसिंग जा रहे हैं उसमें. blood to Then answer are right पर मार्क्स के लिए वैल्यू नहीं कर रहा. The auricles pump the blood, what you said is to the ventricles. Okay, which then you need to say over there because the thickness of the wall decides the pressure. The wall also decides in terms of pressure, but pressure needs to be in terms of distance. So the auricles pump the blood to the ventricle, but the distance is very small. Size is fish size ना, तो ये auricle है तो ये ventricle है, कितना distance है दोनों के बीच में? Hardly 5 centimeter होगा शायद से. So the auricle pumps the blood to the ventricle which are nearby. The distance is very small, so they have less pressure to it. So thin wall. The right ventricle, where does it pump the blood? lungs. To the lungs. The distance is comparatively larger. Okay, from right ventricle to the lungs, the distance is comparatively large. So it has to have a thick wall. But if I take the left ventricle pumps the blood to the blood. मैंने आपको कहा आपके आंसर राइट है, पर आपका आंसर डिस्टेंस में दिखना चाहिए. So the left ventricle pumps the blood to the farthest end of the body, tip of the head and tip of the toes. The distance is quite high, so it has to have a high pressure. So the walls are thick. Am I clear? Yes. So that would be one question based upon the wall thickness. Auricles are thin walled, ventricles are thick walled. Auricles pump the blood to the ventricle, the distance is very small. The right ventricle is larger distance, but it has pumped the blood to the lungs. And the left ventricle to the farthest end, tip of the head, tip of the toes. कोई doubt है? Sure. आगे बढ़ू? Yes. Okay. General knowledge question. Answer बाद में दे देना चलेगा, कोई इशू नहीं. अपन ने कहा heart is divided into 4 chambers. Which septum is that? Intra-auricular and सुना होगा दिल में छेद है. Hole in the heart. Okay. Hole in the inter-auricular septum. होता है. क्यों होता है? ढूंढना. Okay. Is there a hole in you? Yeah, it is an abnormal. Yeah, whatever. Okay. And get back to it. क्या ये होल हम सब में है या किसी में होता है या सर किसी में होता है वो बेचारा बैड लक इसके लिए उसको दिल में छेद है वगैरह. और अगर ये होल सब में है तो क्यों है? ये भी ढूंढना. Okay. So we go ahead with the next part. So I think 4 chambers done.
Right side of the heart is concerned with deoxygenated. The left side of the heart is concerned with oxygen. यहाँ तक किसी को डाउट है? Sure? Yes. Okay. अब आपकी बुक में उन्होंने चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया by saying क्या the heart के उसके बाद उन्होंने मूव किया है in terms of the blood vessel entering the heart, the blood vessel leaving the heart, then regulation of blood through the heart by different valves. तो उन्होंने अलग अलग करके पढ़ा है. We would put together at one go itself ताकि सब कुछ जल्दी करो जाए. So I want you to open your books and start drawing a diagram which I am drawing after this. तो मैंने अंदर आने के लिए बोला था. ये मम्मी डैडी को बुलाने गया कि लाने गया? चलना भी बोल रहा हूँ. Okay. Now this diagram which I am writing from the board is a very small diagram, a very simple diagram. पर अगर आप ये complete कर लेते हो study समझने के लिए, तो आपका इसमें से half the part is done. We are counting in this part is blood vessel entering, blood vessel regulation of heart, and most important working of heart. ये भी इसमें से करो जाता है. So you do not have to go through the entire part over there. Okay. Now from the entire body. The blue color represents deoxygenated blood over here. तो मैंने color use किया हुआ है. From the entire body, the deoxygenated blood enters into the right auricle. We already said the auricles are the deoxygenated. Right side is deoxygenated blood. Auricles are always referred as receiving chambers, whereas ventricles are always referred as distributing chambers. तो हमेशा receive auricles करेंगे, distribute ventricles करेंगे. So from the entire body, the deoxygenated blood enters into right auricle by receiving chamber in via superior vena cava, also known as pre-cavals, also known as anterior vena cava. Whichever choice, your choice, क्या लिखना है, but better to write it superior vena cava. Then comes the inferior vena cava, also known as post cavals, also known as posterior vena cava. Third vessel, which collects the blood from the heart, is a third one known as coronary vein. So these are three blood vessels which pours the deoxygenated blood into the right auricle. If I take the heart like this, सबसे पहले superior vena cava, the name itself, it collects deoxygenated blood above the heart. So what will be the above the heart?
chest, arms, shoulder, neck, and the entire head. From there, all the deoxygenated blood will be poured into superior vena cava, which will enter into right auricle. Inferior, lower the heart, lower body name, lower part of the heart. Kya? Legs, abdomen, stomach, liver, kidney, reproductive organ. दो तीन लिख देना काफी है. Okay, so from there it pours into the right auricle. Up हो गया, down हो गया. बचा दो पार्ट. एक साइड, साइड में क्या है? साइड में हार्ट की साइड में क्या है? अलग से लिख ही रहे हम लोग. तो हो गया, तो बचा heart itself. The heart also uses the blood, so it also converts into deoxygenated blood. So that deoxygenated blood from the walls of the heart. Then यहाँ पे आपकी गलती is you always write the heart. It pours the blood from the heart. If you write heart, no marks. It collects deoxygenated blood from the walls of the heart and pour it into the right auricle via coronary vein. So heart से wall से collect होके it enters into right auricle via coronary vein. Diagram में ये कभी दिखता नहीं. Akshana part में just base after superior vena cava पे ये open होता है. So we never see this diagram, but these are three blood vessels which are entering into the right auricle. From the right auricle, the blood goes to the right ventricle. दोनों के बीच में tricuspid valve. अब अगर tricuspid valve का देखता हो तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये तीन पार्ट से बना हुआ है. There are three cuffs like structure. Okay, ये ऐसे, you can see this is the three parts. My finger represents three parts. ये ऐसे ऐसे open close हो सकते हैं. They're like this, like this, like this, like this. They're open and close. So that is what tricuspid valve are. यहाँ पे हमें इसके बाद कुछ और पढ़ना है जो हम बाद में पढ़ेंगे. फिलहाल फ्लो पे जाते हैं. So from the right auricle it enters into right ventricle. From the right ventricle the blood goes to the lungs for oxygenation. Via which vessel? Pulmonary and exceptional artery, which carries deoxygenated blood. From the pulmonary artery it goes to lungs for oxygenation. The oxygenated blood returns back to the left auricle via pulmonary vein. Okay, and again exceptional artery vein which carries oxygenated blood. From the left auricle, the blood goes to the left ventricle. Bicuspid valve, made up of two cuff-like structures, so that is why bicuspid valve. From the left ventricle, the blood goes to the entire body. Okay, via the largest and the thickest artery, known as aorta. Okay, just for your knowledge, तो diagram में दिखाने के पर दिखाने के सिर्फ नाम के लिए, just as it moved out of the aorta, base पे there is one more vessel which is given out. जैसे aorta बाहर निकलता है heart से, उसी के base से एक और एक blood vessel बाहर निकलता है, known as coronary artery, the most important artery because it supplies oxygenated blood to the walls of the heart. So मैंने आपको वापस बोल रहा हूँ, आदत है अपनी, आप लिखोगे यही to the heart, marks नहीं मिलेगा फिर, to the walls of the heart. Now this is how the blood flows in. So अब अगर मैं इसको simple recall तो these are the blood vessels entering into the heart. 1, 2, 3. Fourth is pulmonary vein. ये चार entering in the heart है. Which are the blood vessels leaving the heart? Pulmonary artery, aorta, and देखा जाता है coronary artery, which are leaving the heart. Am I clear? कोई doubt है? Okay. Now, moving to the part अपन coronary artery के ऊपर focus करेंगे फिलहाल. So when I say coronary artery,
It is supplying the blood to the walls of the heart. तो अगर मैं हार्ट को दिखाऊं इस पार्ट में, this is the aorta which is coming from the left ventricle. So just at the base of the aorta, this is the blood vessel which comes out, and it just simply goes on to divide onto the walls of the heart. Okay, आगे जाके ये divide होंगे capillaries में, capillaries will unite to form the coronary vein, which would again open up at the superior vena cava के ऊपर. अब coronary artery जो होती है, which supplies the blood to oxygenated blood, they are given a very nice example in the book as bank cashier. Okay, now यहाँ पे this coronary artery sometimes gets blocked. मैंने यहाँ पे क्रॉस डाल दिया है, यहाँ पे ब्लॉक हो गया. Because of this blockage, the blood is not able to supply to this area. So if that area is not able to get the proper blood, oxygenated blood, what will happen? अच्छा, मतलब ब्लॉक हुआ है कार्डियक अरेस्ट. वेरी गुड. और कुछ पहला क्या होगा? गुड. सर पहले तो यहाँ पे because the oxygen is not reaching, the cells will start dying. Oxygen नहीं है ना, cells will die. Okay, technically known as necrosis of cells, not required for us, but cells die. अब इतनों से पार्ट का सेल्स मर चुके हैं, so other part जो जिंदा है उसके ऊपर प्रेशर गिरेगा. Okay, so there is a more pressure on the other part to work efficiently. It is still pumping with that efficiency. कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कम हो रहा है, पंप हो रहा है, so that is resulting into a acute chest pain known as angina or angina pectoris. मतलब क्या है? अरे बोला तो आपने सब. Good. Angina is a biological term for pain. Angina मतलब pain. Pectoris E students. Pectoral muscles. आपके यहाँ पे pectoral muscles है. Okay? The blood जो पंप हो रहा है हार्ट से, पहला कहाँ पे पंप हो रहा है? आयोटा में. आयोटा बाय डिफॉल्ट किस डायरेक्शन में आ रहा है? लेफ्ट साइड. मतलब पंपिंग लेफ्ट साइड पे ज्यादा हो रहा है. अब उसी पे पंपिंग कम होगा. So where is the blood not reaching? To this major muscle which are known as pectoral muscles. यहाँ पे थोड़ा ब्लड कम होने के वजह से there is an acute pain seen in the pectoral muscles known as angina pectoris. अपन बेसिक लैंग्वेज में मतलब बोलने के लिए बोलते चेस्ट पेन. Okay? पर not exactly. रीजन मान लो 8-10 हुए, 8:15 को ये बोलते हैं सर चेस्ट पेन हो रहा है. टेक हर टू हॉस्पिटल. सर हार्ट अटैक आने वाला, एडमिट कर दो. इज इट लाइक दिस? या मुझे चेस्ट पेन हो रहा है सर एडमिट. सर ऑपरेट ही कर लो सर. सर नहीं आया तो अच्छी बात है. देखा? व्हाट इज द रीजन? चेस्ट पेन. व्हाट वुड बी द नॉर्मल? सबसे पहला क्या होगा? हार्ट अटैक के लिए थोड़ी पूछा रहा हूँ यार. तुम्हारा चेस्ट पेन हो रहा है, इसका हो रहा है, उसका हो रहा है, हार्ट अटैक होगा. डॉक्टर नॉर्मली क्या बोलेगा? व्हाट इज द पेन फॉर? बेसिक रीजन. सबसे पहले तो अरे एसिडिटी हुआ, कुछ खाने का था ना, एसिडिटी हुआ. ही विल गिव अ मेडिसिन. बोलेगा 2-3 दिन मेडिसिन खा ले, आराम ठीक हो जाएगा. जो भी जो भी है, 2-3 दिनों से मेडिसिन ले लिया. डॉक्टर फैमिली डॉक्टर है, ट्रस्ट द डॉक्टर. 3 दिन तक तो कुछ नहीं फर्क पड़ा. Still there is a pain inside. She goes back to a doctor. Doctor फिर उसको क्वेश्चन पूछेगा, but this time it will be specific questions. Okay, pain कब होता है? When is the pain seen more of? He said, sir, सुबह मैंने get up, सो के उठती हूँ तो सब बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होता है. तो सब पत्थर रख के हैवी. Okay?
Doctor. Second question. Okay. When you climb the stairs, is it you're feeling breathlessness? सर ज्यादा सर अब भी आपका लिफ्ट बनता सर 3 मजले चढ़ के आ सर ये मुझसे कंफर्म भी करेंगे so second symptom third and the most important okay because patient अपना हमेशा excited बोलेगा ही बोलेगा तो अब ये बोलेगी सर और एक चीज नोट किया है पेन बहुत होता है acute पेन होता है पर सर थोड़े टाइम के बाद ना पेन सबसाइड होता है and starts going to my left side. The moment she says left side, that side is side. Okay, it's a sure shot symptom. Okay? You may probably have a heart attack. Okay, heart attack आने के chances ज़्यादा है. Pain is angina pectoris, पर symptom heart attack का आ रहा है. सबको समझ में आ गया? Good. My next general knowledge question. इसका आंसर पाना चाहिए पेन हुआ डॉक्टर को बोला लेफ्ट साइड में हुआ कंफर्म भी है क्या अभी चांसेस है क्या सो व्हाट नेक्स्ट कंफर्म कैसे करोगे कि हार्ट अटैक मतलब ब्लॉकेज है नहीं है MRI उस MRI के मशीन में डालने के बाद जो साउंड निकलेगा ना उसको हार्ट अटैक वैसे भी आ जाएगा स्वेटिंग बस स्वेटिंग से टेस्ट करते हैं सीटी स्कैन और कुछ बचा है अल्ट्रासाउंड ओके एनीबॉडी एल्स गुड एकोकार्डियोग्राम ईसीजी बेसिक होता है जो कंफर्म नहीं करेगा क्या ये पॉसिबिलिटी है इट कैन शो मी स्लाइट एबनॉर्मलिटी मे बी आई एम नॉट सेइंग कंफर्म दिखाएगा वो भी शायद दिखाएगा नहीं दिखाएगा सो देन वन इज ईसीजी जो नॉर्मली किया जाता है बट उसके अलावा द फर्स्ट थिंग दे विल डू इज आइदर 2D को तो उससे सिर्फ पता है कि ब्लॉक है but the best option is to undergo angiography सर मैं तो यही बाजू वाले की तो वही मैं बोल रहा हूँ ना मैं यही बोल रही थी बाजू वाले को वो उसको शायद बोल रही थी तू उसको बोल रहा था नहीं दिया पहला एंजियोग्राफी किया जाएगा so what is एंजियोग्राफी तो क्या किसको पहुंचने के पीछे पड़ी क्या ओपन हार्ट ऑपरेशन व्हाट इज एंजियोग्राफी कैमरा इतना कंफर्म है तुम डॉक्टर में बनो या क्या अपना गुड फ्लूइड नहीं डालते दे पुट अ डाई इन योर ब्लड आपके आइदर थाई या आपके हैंड के इसमें से ब्लड वेसल में दे पुट अ डाई होता है व्हिच इज पुट इनटू द ब्लड दिस डाई इज अ एक्सरे मार्कर मतलब ये आपके एक्सरे में ये मार्क हो जाता है सो नाउ आई पुट द पर्सन इन द बॉडी मशीन व्हिच इज लाइक सीटी स्कैन की तरह पर ये रियल टाइम 3 डायमेंशनल एक्सरे निकालेगा जैसे अपन वो एक्सरे निकाल खड़े रहते हैं फटक से एक्सरे का वैसा नहीं इट्स अ रियल टाइम 3 डायमेंशनल एक्सरे वेयर द फोकस इज ओनली ऑन द हार्ट नॉट द एंटायर बॉडी सिर्फ हार्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा 3 डायमेंशनल एक्सरे के वजह से क्या होगा पूरा जितना ब्लड यहाँ पे मूव हो रहा है उतना वो सर्कुलेट करते दिखाई देगा अब वो डाई जहां पे मूव हो रहा है वहां पे ये दिखाई देगा अगर ब्लॉक होगा तो कैन इट मूव फर्दर सो वहां पे उस जगह पे देयर कैलकुलेशंस डन at what speed the dye is moving because 3 dimensional real time x-ray वो स्पीड भी कैलकुलेट कर लेता है तो अगर ब्लॉक स्लो डाउन हुआ मतलब ब्लॉकेज है किस स्पीड से जा रहा है वो डिसाइड करेगा 10% 30% 50% 90% ब्लॉकेज ओके अब अगर 50% के नीचे या 60% के आसपास वगैरह हुआ देन द नेक्स्ट स्टेप इज एंजियोप्लास्टी स्टेंट डाला जाता है उस जगह पे उसको ओपन अप करने के लिए it's a small metallic pipe which is put on that area and it just open up
ताकि वो जगह बनाए ब्लड को मूव करने के लिए. That doesn't guarantee क्या वहां पे वापस ब्लॉकेज नहीं आएगा. Blockage can again be formed over there. So it is not सर डाल दिया अब मैं अपनी लाइफ पूरी तरह से जी ऐसा नहीं. थर्ड, अगर वो 90% ना हो या 80% ना हो, वो डॉक्टर के ऊपर डिसाइड करेगा. He would not go for the stent because अगर 90% अबव है स्टेंट डालने के चक्कर में वो वहां पे ही रप्चर हो सकता है. Okay, the patient will die on the operation theater table. Okay, डॉक्टर इतना बड़ा रिस्क अपने नाम के साथ अटैच नहीं करेगा because the moment the patient dies, his reputation is at stake. Nobody will like to go to doctor जहाँ पे patient मर रहे हैं. But obvious है. Okay, so he would go for the last option, open heart surgery. पुराने जमाने में ओपन हार्ट, आज के जमाने में ओपन हार्ट सर्जरी. Because really in the olden times they used to open up like this पूरा 18 या 24 टाके होते थे, स्टिचेस होते थे. Because one of my close friend की मदर का हुआ था उस टाइम when I was in 9th standard I guess. तो मैं देखा था. Okay, almost for 24 or 18 stitches. Okay, तो recovery time almost 3 to 6 months होता था. आज की डेट में a very minor operation, टिक टिक और 3 इधर और इधर 3 छोटे से होल बनाते हैं, ऑपरेट किया जाता है. सुबह 4 बजे ऑपरेशन खत्म हो गया, शाम को आँख खोल के बात करना चालू कर देता है. नेक्स्ट डे मॉर्निंग पेशेंट को चलाते हैं. okay? उसके नेक्स्ट डे बाय बाय गेट फर्स्ट. भाई पैकेज उतना ही था. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रखेंगे पेशेंट को, उसके ऊपर अनलेस इंश्योरेंस का पेशेंट तो फिर बकरा हलाल का है. 5-6 दिन तो कंपनी प्रोवाइड 3 days. इंश्योरेंस का है तो 10 दिन भी रखेंगे, क्या जा रहा है, इंश्योरेंस का पैसा तो आने दो. ऑल दैट मैटर्स. दैट इज व्हाट हार्ट अटैक इज. अगर ये ब्लॉक हुआ देन angina pectoris is the first step, later on forming what we say as heart attack, myocardial infarction. It is FAR and not FRA. फ्रैक्शन नहीं है, इंफाक्शन. तो अपन लिख के आते हैं मायोकार्डियल फ्रैक्शन, इंफाक्शन. एंड आके सर राइट तो लिखा था, देखो पहला स्पेलिंग तो चेक करो आगे करने के पहले. तो दैट इज व्हाट इट मींस. चल, मायोकार्डियल इंफाक्शन इज नथिंग बट ब्लॉकेज इन द हार्ट vessels, coronary artery, okay, and not any other blood vessels. See, heart से blood. And they are beautifully explained over here is about the coronary artery and all this thing. Is they give an example of bank cashier. जैसे पूरे दिन में बैंक कैशियर के पास दुनिया भर का पैसा आता है, 1 करोड़ रुपए उसके हाथ से आते रहते हैं. But can he take that money home? No. But he takes the money home once in a month. What is that? Same way, पूरे दिन भर हार्ट में दुनिया भर का ब्लड आते रहता है, but he only takes a small amount in terms of coronary artery. से उसके वॉल्स पे जाता है, where he utilizes for his own purpose. हार्ट बीट करने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, and that is provided by the coronary artery. Am I clear? कोई डाउट है? Sure. Any doubts in this part? समझ में आया? Based upon this diagram, we move ahead to the next part. Is working of the heart. अगर मैं इसी डायग्राम को एक सिंपल फ्लो में लाऊं तो सिंपल है. The body से blood goes into right auricle relaxes, the blood enters into right auricle via the right auricles, then पहला रिलैक्स तब आप क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट. So bird is pumped to the right ventricle. At that time right ventricle is relaxed. Now the right ventricle, the blood is pumped to for via answer stops abruptly over here. इधर फुल स्टॉप लग गया, फिर घुमा के वापस. The left auricle क्या होगा, relaxes. The blood from the lungs collects into the left auricle via which type of blood, the left auricle now
So left ventricle. The left ventricle now. Now left ventricle. Again, children, this is what we say working of the heart. Okay? पर नहीं ये वर्किंग ऑफ हार्ट ही है पर प्रॉब्लम ये है कि जिस ऑर्डर में हम गए उस ऑर्डर को अगर मैं हाथ पे दिखाऊं तो ये मान लो मेरा थंब राइट साइड है लेफ्ट साइड ऑरिकल वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल और जिस ऑर्डर से अपन गए तो हार्ट ऐसे वर्क करेगा एक एक अलग 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 then heart cannot work individually it works together as two chambers ऐसे ऑरिकल साथ में ventricles साथ में so working of the heart when we say there are three steps in working of the heart सबसे पहला step if you want नीचे एक लाइन छोड़ के working of the heart लिखोगे हेडिंग अब वर्किंग ऑफ द हार्ट में पहला स्टेप ऑरिक्यूलर रिलैक्सेशन also known as diastole एग्जाम में क्या लिखोगे diastole रिलैक्सेशन लिखा नो मार्क्स no marks are given for your generalized answers so technical terms are expected auricular diastole. Up auricular diastole, leave 3-4 lines. Second point. So both the auricles are relaxed. The right auricle receives deoxygenated blood from the entire body via superior, inferior, and coronary vein. The left auricle receives oxygenated blood from the lungs via pulmonary vein. ये लिखना है उसके अंदर पूछेंगे एग्जाम में कभी नहीं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता ही नहीं ना अपने को सिलेबस में वो कैलकुलेट रट्टा मारने का तो लीव इट जस्ट समझने के लिए समझना है सेकंड पॉइंट अब ऑरिकुलर क्या होगा ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नोन एज सिस्टोल और जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस टाइम पे वेंट्रिकल्स क्या है सो एट द सेम टाइम देयर इज वेंट्रिकुलर relaxation what we say as diastole so second point में दो points combine हो जाते हैं अब इसमें क्या लिखोगे ventricular systole auricular systole में both the auricles contract thereby pumping the blood to एक वर्ड मिसिंग होगा अगर मुझे लिखना है तो मुझे इंडिया लिखना पड़ेगा the right auricle pump the blood to right ventricle the left auricle will pump to left ventricle better option both the auricles contract thereby pumping the blood to respective ventricle so when I use the word respective it is but obvious right to right left to left so ventricle that is auricular systole at that time ventricular diastole is occurred last step दो लाइन छोड़ के तीन लाइन छोड़ के वापस ventricular contraction or what we say as systole. अब ventricular systole क्या होगा? The ventricles contract. The right ventricle pump the blood to lungs via and the left ventricle pumps the blood to entire body via. That's the three steps working of the heart. Am I clear? Yes. कोई डाउट है? Okay. अब चलन अब तक कभी भी डिस्क्रिप्टिव में पार्ट में कभी नहीं आया. Never they ask you descriptive part. So whatever questions will be asked on here. यहाँ पे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस ही पूछेंगे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आता वहां पे. तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम दिया जाएगा. Open your textbooks, page number whatever it is, 103. 103.
there are two diagrams given, A and B. मिला? Okay. Then अब डायग्राम दिया जाएगा. पहला क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट क्या होगा? Identify the face given in the diagram. So it has to be either auricular systole, which is nothing but also known as ventricular diastole, or it could be ventricular systole, or also known as auricular diastole. Absalon, how do you identify this? पहला तो फेज लिखोगे, उसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. आपको रीजन लिखना है. तो सबसे पहले द सुपीरियर हरी पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा. आपका ये हार्ट था, यहाँ पे आपके ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पे आपके बाइकस्पिड वाल्व है. देयर इज दिस पल्मोनरी आर्टरी, देयर इज दिस एओर्टा. अगर इनको देखता हो तो इनके बीच में भी वाल्व है. There are valves in the starting point of the pulmonary artery, the starting point of aorta. Difference between arteries and veins. Arteries do not have valves, veins have valves. Then please, arteries do not have valves. यहाँ पे valve starting पे है and not inside. Okay, just at the start पे वहाँ पे valve है. Now, what is the difference between the tricuspid, bicuspid and this valve? इन valve को नाम दिया गया as semi lunar valves. Semi, half lunar moon, half moon shaped valves. तो ये टेक्निकली ऐसे होते हैं, मून की तरह ऐसे. और इनका ओपनिंग इज ऑलवेज ऑन द अपर साइड एंड क्लोजिंग इज ऑन द lower side. Tricuspid and bicuspid valve is opening on the lower side and closing on the upper side. अब इनके लिए major question जो आएंगे and the most favorite questions. कितना कुछ गिरा रहा है दोस्त? Water गिरा रहा है, pain गिरा रहा है, currency गिरा रहा है. Okay, so now what were the questions asked? सबसे पहला favorite question क्या होगा इसमें से? Give the location of. जहाँ पे आप मार्क्स दान धर्म करके आते हो. Okay. First, give the location of tricuspid valve. Give the location of bicuspid valve. क्या लिखोगे? You can refer your book and give me the answer. No issues. Tricuspid valve, bicuspid valve. Bicuspid valve in right. Between the right auricle and the right ventricle. Bicuspid between the left auricle and the left ventricle. ये सबसे easy है. इसको पूछने के chances बहुत कम. उसके बाद give the location of semilunar valve, pulmonary semilunar valve, aortic semilunar valve. तो ये है pulmonary और ये है aortic. जो pulmonary में है वो pulmonary semilunar valve, जो aorta में है वो aortic semilunar valve. Function To avoid backflow. to avoid backflow of blood. Location At the base of the at the base of the aorta, opening of the at the opening of the aorta. आंसर बताओ कौन सा राइट है? Opening of the aorta. देखो बुक में क्या लिखा है? Point of origin of aorta. Point of origin of aorta near the right left ventricle. Same goes for pulmonary, the aortic pulmonary valve also, semilunar valve. क्या आएगा? The origin of the pulmonary artery near the right ventricle. Okay, that you will. अगले इनमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा.
लोकेशन का। अब उसके बाद ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, where are they opening? Down. Where are they closing? Up. Now, what prevents them from overturning? Diagram देखना. They are given a part cardiac tendon. Figure 8.7. मिला? White color का part draw किए हुए हैं. Cardiac tendon. And इनका location और इनका function दोनों पूछ सकते हैं. So पहला function. What will write function? It okay. It holds the flaps valves in its position, or it holds the valve in its position and prevents overturning of the valves. अब सर यहाँ पे individual valve तो नहीं पूछेंगे, मतलब simple पूछा है. So it prevents the overturning of atrioventricular valves. है ना? Say atrioventricular मतलब both the tricuspid as well as bicuspid valve. दोनों के बारे में हम लिख रहे हैं. So it prevents the overturning of the atrioventricular valves. Clear with this? अब आएगा last part. Location. ये आप मुझको ढूंढ के next lecture में बताओगे तो भी चलेगा. I want a proper location of cardiac tendon. Sir, एक और location है पर इस बोल. exact location of centrum. Exact ना? Exact location of centrum. हाँ, centrum में होता क्या है? हाँ. So at a point of attachment of the arms of the sister chromatids or crossing of the sister chromatids is centromere. So because location के लिए वो ऊपर नीचे होता है. Sir, बोल. they arise from the muscular projection of ventricle lobes, Good. known as capillars. ये half है. इतना आसानी से मुझे बुक में मिल जाता था तो मुझे पूछता भी नहीं था. ठीक है? इसके लिए मैं ढूंढ के बताना. So your homework will stop over here today. और आपका homework क्या क्या ढूंढना? एक तो कार्डियक टेंडिन का लोकेशन ढूंढना. अगर इंटरेस्ट होगा तो ढूंढना होल इन द हार्ट क्या है. हाँ, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में होल होता है क्या? नहीं होता है. होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों होता है, ये ढूंढ लेना. ठीक है. I think a small part left out after that are all small projection only. फिर वो sound है, heart beat है, blood pressure है. I think वो छोटे-छोटे parts है, वो जल्दी हो जाएंगे. I think mostly 1 hour, मतलब 1 या 1.5 hour में अपना circulatory system खत्म होगा. मैडम, एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए बोलना मुझको कब डालना है. उद्या किती वाजता? 4 ला नाही. 5 लेक्चर आहे ना. ठीक आहे. पहिला कन्फर्म करून टाक इकडे. एक तर उद्या नाहीतर मग परवा. सॅटर्डेला सुट्टी आहे का काय? नाही, सॅटर्डेला माझी होती. Extra sound क्यों होता है? Extra sound. साउंड पे आना. Extra sound. हाँ. एक्स्ट्रा नहीं. देखो थॉमस. 2 साउंड होते हैं. सर हाँ क्यों? क्या है? इसमें तो मैं पेन ड्राइव निकल. वो एग्जिट कर पेन ड्राइव निकल. वो मेरे भी नहीं हुए. बस ज्यादा
What? When I saw a case where like 99 side वाला वो उसको convey case मानता है. Basically it's without it should happen. আচ্ছা আমার কি আছে বলো না গো কি করে সময় পাবো বলো ভালো আছো यहाँ पे मैंने की रखा है হ্যাঁ ভালো আছি বলো খাওয়া দাওয়া হয়েছে হয়নি আচ্ছা তা সকালে করে নি আচ্ছা 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 বলো হ্যাঁ আমার কথা
কোন কালার বড় থাকে সে আবার আগ করবে আচ্ছা আচ্ছা কেন মাথাটা কি আর খাওয়া থাকবে কিছু হবে না হবে না মানুষে চিন্তা করো না বলো কি বলছো আচ্ছা দেবা বলো আমার দাম করছি